नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप और आपके परिवार सुरक्षित हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ समय निकालकर उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स के बलिदान को भी थोड़ा सा याद करें। ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जिन्हें अपनी सोसाइटीज़ में, मोहल्ले में और सरेआम हिंसा और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस के खिलाफ ऐसी किसी भी हरकत को आप अपने स्तर पर रोकें। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उन लोगों की सुरक्षा के लिए आवाज तो उठा सकते हैं, इंसानियत के नाते, जो अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। Wishing you all a very happy Gudi Padwa. Today also marks the beginning of Chaitra Navratri, and it signifies the triumph of good over evil and the mark of a new beginning. I know it's a rather quiet time for us all, with everything around us coming to a standstill, but the next 21 days are crucial, and I request you to continue showing solidarity and sensibility. Please stay strong and positive in these difficult times. We shall and will overcome this together. Let's ensure we do our bit to break this chain by staying indoors and correcting people who are not adhering to these rules. Please take care of yourselves. Stay healthy, stay good, and look after your loved ones. Bye. Hello everyone, this is Shilpa Shetty Kundra. There's just so much happening around us with this lockdown that it can actually make us feel very low. So while there is this fear of our health and these fears looming over us, I want to talk to you parents and kids about something very important: your health and wellness. I'm sure there's so much energy within you that needs to be channelized and harnessed. I know, I get it, being indoors can feel extremely boring and even very depressing. So how about we look at becoming fitness champions for ourselves and for our family and friends? Sounds exciting, na? So here is a quick video of how we make our son Dian get enough exercise and activity while he's just whiling all his time to build his immunity and strength while he's at home. That was so fun, wasn't it? You can also do this and the exercises that you have learned at your school, at home, and get your mummy, daddy, dadi, dadu, nanu, nani, didi, bhaiya, whoever you live with, involved in whatever small little way. Use just some of this precious time in looking after your health and your loved ones. And yes, stay safe, stay at home, swasth raho, mast raho. Okay, this is a difficult time and people are vulnerable, but there are some people that are bent on spreading false rumors. So please do not believe all the forwards and videos jeopardizing your health and safety. Only listen to the instructions given by government officials like the NCDC, the National Center of Disease Control, WHO, and real doctors. Please don't keep forwarding these messages. Break the chain of the virus and the ignorance and misinformation. Stay home, stay safe. हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दौर आएगा और हम सभी को ऐसे रहना पड़ेगा, पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट रहने के लिए घर है, दो वक्त की रोटी है, सारी सुविधाएं भी हैं, एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनके पास इनमें से शायद कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसे वक्त में उनके काम आना और उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। अपने देशवासियों की ओर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप घर बैठे भी निभा सकते हैं। So why don't you all join the hashtag मैं भी कोविड वॉरियर, which is an initiative by Give India, Action Aid and Hello, और डेली वेजेस पे काम करने वाले हमारे भाई बहनों को सपोर्ट कीजिए। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट ये संस्थाएं भी करेंगी।
तो आइए एक होकर इन जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आइए। नमस्कार। That's Poppy. Just arrived from outside. I've never seen such a friendly parrot. I've never ever been so close to a parrot in my life. Just came and sat on our windowsill. It's bizarre. Hey, Poppy. Oh. Inexplicable. Hey, sweetie. Part of the family now. Poppy Shetty Kundra. You want to say something? Hey.